Hello and welcome, my grade 9 students. Today, dear students, from our Beehive book, chapter number 1, we are going to study about the poem in it. The poem with the title The Road Not Taken. The poet is Robert Frost. It is a very interesting poem. I'm first going to recite the poem for you, okay? And after that, I will explain what it means. So let's begin. The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. So you see, this is briefly about the poet. Robert Frost is an American poet and he writes very simple poems, but then the data, the content in those poems are something wonderful. Okay, it makes us think a lot. So let me recite the poem for you first. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted weir. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Okay. So you see, this is the poem. Now let's understand what it is. It's really interesting. Listen carefully. So, two roads diverged in a yellow wood. Okay, two roads. Diverge means dividing. When we have a diversion, it means if we are going on a straight road and then there is a left and then there is a right. There are two roads now. Okay. Then in a yellow wood is a forest in which yellow leaves are falling from the trees. That is, the leaves that have dried are falling on the ground. So everywhere the leaves are dried brown yellow color. So it is called yellow wood. Okay. So two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. Yes, one person cannot travel two roads, isn't it? If you are walking and you come to a point where the road has a left and the right, you can take only one, isn't it? And be one traveler, long I stood. He was the only one. He was a single person traveling, and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. So he stood there. Okay. The poet Robert Frost was walking on a road, and then the road divides itself into two. Now he was standing there. Okay. Okay. So he stood and he was looking at the two roads. He tried to look as far as he could. Okay, to see where one road is going or where the other road is going. But then there was an undergrowth, that is small plants growing into a bush. Okay, there were bushes, so he could not see very far. अब देखें स्टेंजा 1 में क्या होता है. रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हमारे पोइट हैं वो बता रहे हैं कि जीवन जो होता है इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें फैसले लेने होते हैं, चॉइसेस बनानी होती है, डिसीजंस लेने होते हैं. इसी तरह जिंदगी में जब आप एक राह पर चल रहे हैं, ओके, आपके आगे फिर जो सड़क है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेट्स से, ओके, टू रोड्स डाइवर्ज. एंड सामने क्या होता है, येलो वुड, मतलब एक जंगल जिसमें पतझड़ हुई हुई है, पत्ते गिर चुके हैं पेड़ों पे से, सूखे पत्ते, इसलिए उसे हम येलो वुड कहते हैं. एंड दोनों रास्ते तो वो नहीं ले सकता, इजंट इट, क्योंकि वो एक अकेला है. पर वो कोशिश करके दोनों रास्तों पर दूर तक देखता रहा, पर आगे सिर्फ जंगल ही था. ओके, दैट्स स्टेंजा 1. नाउ
then took the other just as fair, and having perhaps the better claim. अब देखें, दोनों रास्ते थे, ठीक है. The poet decides कि ये वाला रास्ता ले लेता हूँ. उसके बाद सोचता कि नहीं, दूसरा भी तो ऐसा ही है, फेयर मतलब इक्वल ही होंगे दोनों, ठीक है, एंड शायद बेटर भी होगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. अब देखो, ग्रासी जिसपे घास होती है, ठीक है, एंड देन वॉन्टेड वेयर. वेयर का जो मतलब होता है, नॉर्मल आपकी फर्स्ट मीनिंग जो होता है वो तो होता है पहनना, लेकिन यहाँ पर जो कंटेक्चुअल मीनिंग है इसका, वेयर का मतलब होता है घिसना. वियरिंग एंड टियरिंग जैसे फ्रिक्शन में होता है. सो यहाँ पर था घिसना, कि एक रास्ता है जिसपे जो घास है, देखो जिस रास्ते पे ज्यादा चलते हैं उसकी सारी घास घिस जाती है, ठीक है, कुचल कुचल के. जब हमारे पाँव पे चलते हैं, लोग उस पे चलते हैं, तो सारी घास टूट फूट के सूख जाती है, isn't it? So उनका कहना था कि जो रास्ता ऑलरेडी घिसा हुआ है, जिस पे सब चले गए, उस पे क्या जरूरत है, दूसरा भी सेम ही लगता है, उस पे घास थी एंड वो अभी था, वो चलने के लिए था, तो मैं वो वाला रास्ता ले लेता हूँ. Though as for that the passing there had warned them really about the same. ठीक है, सो जो दूसरा रास्ता था उस पे काफी चल चुके थे पहले ही. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. अब जिस समय हमारे पोइट पहुंचते हैं, उनका कहना है कि उस सुबह दोनों ही रास्ते इक्वल थे, बराबर ही थे. उनपे जो पत्ते पड़े हुए थे, उनपे अभी तक कोई चला नहीं था. ट्रॉड, ओके, ट्रॉड का मतलब होता है वॉक, चलना. सो अब तक उनपे कोई नहीं चला. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So अब हमारे पोइट क्या डिसाइड करते हैं कि मैं सेकंड वाला रास्ता चुन रहा हूँ, पहला वाला रास्ता किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ. हालांकि when we walk on one way, after that many other options come in, isn't it? For example, let me give you this. If you are completing grade 10 and you are moving to grade 11, you have to make choices for your stream, whether you are in the art stream, that's the commerce, or the science stream, isn't it? You have to make this decision at the beginning of the session. And once you make the decision, that's it. You move ahead and you continue. But at that moment, if you think, let me take science, later on, I will think about commerce. See, it's not possible. When you take science, you keep on studying, there are more options as you move ahead in life. Okay? You know it, that you cannot come back and take commerce. So in the same manner, our poet says that he kept the other way, the other road for another day. But then he knows one way leads on to another way. मतलब एक रास्ते से और आगे बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है. सो उसे ये भी शक था कि क्या पता मैं यहाँ वापस आऊंगा कभी या नहीं दूसरा रास्ता लेने के लिए, ठीक है. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. So now the poet says that in future, he will be telling us this with a sigh. A sigh is an expression, the way we do, okay, there's an expression of breathing out. जब कुछ होता है या हम कुछ सोचते हैं, उसके बाद हम हामी भरकर जब बोलना शुरू करते हैं, वो एक्सप्रेशन जो होता है बेटा, हाँ, सो यू नो, ये होता है साई, SIGH. इसका जो जी है, it is silent, sigh. So the poet says that later in future he will tell us, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So future में आगे चल के बताएंगे कि एक सड़क थी जो आगे चल के दो में बढ़ गई थी. मैंने वो रास्ता चुना था जिसमें कम लोग गुजरे थे, उसी से ही सारा फर्क पड़ गया. देखिए, जो हमारे पोएट हैं, इसे हम प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे हैं इस पोएम को. आपको ये लॉजिकली समझने के, जो ये हमारे जिंदगी में हमें अक्सर ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, चॉइसेस बनाने के लिए हमें समय दिया जाता है. एंड जब हम चॉइसेस बनाते हैं, हमें बहुत सोच समझ कर चॉइसेस बनानी है, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि
आपके आज का लिया हुआ डिसीजन आपके कल, परसों, आगे फ्यूचर को डिटरमिन करेगा। उसी से, उसके बेसिस पर आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अगर आप साइंस का स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आगे चल के आपको साइंस ही पढ़ना है आपकी बैचलर्स में एंड फर्दर स्टडीज में। यू हैव टू रिमेन इन साइंस। So according to the poet, we should always think very well before taking decisions in life, because whatever we decide today gives the output of our future. Okay, that is what our life matters on, the choices we make. So the road not taken is a very interesting, you can see it's a poem about the choice that we made and the choice we did not make. Okay, that is simply what it means कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे, जो ऑप्शन हमने ले लिया वो सड़क है जिस पे हम चले गए, जो ऑप्शन हमने नहीं लिया वो वाली सड़क है जो हमने नहीं चुनी। ओके, द रोड नॉट टेकन। थैंक यू।